I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my What's up guys, welcome to GFM। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आपके साथ होममेड अफगानी चाप की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। अफगानी चाप के साथ साथ मैं एक मिंट चटनी की रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ, जो आप इस रेसिपी के साथ खा सकते हैं। एंड नाउ गाइस, हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम एक मैरिनेशन पेस्ट रेडी करें। सो वो बनाना शुरू करते हैं। अब गाइस, हमारी मैरिनेशन पेस्ट रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे एंड तब तक हम जल्दी से मिंट चटनी बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हमारी मैरिनेशन पेस्ट और मिंट चटनी दोनों रेडी हो गई हैं। अब हमने चाप को डीप फ्राई करना है एंड फिर उसके छोटे पीसेस कट करके उसको मैरिनेट कर देंगे। आप चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग इट, आप उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना तो। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। गाइस, अब हमने चाप को डीप फ्राई और मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको कैप्सिकम और अनियन के साथ मिला के डायरेक्ट कुक करेंगे। सो गाइस, ये थी मेरी होममेड अफगानी चाप की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।